Hello everyone. I hope you're doing fine. Your preparations are going really well and you are preparing very sincerely. Well, not a lot of days, just a matter of a couple of weeks or so, and then you will have the day. Well, before that, one very important and significant, and sometimes it could be decisive also, suggestion to you. What you do is you prepare until 2 or 3 days before the exam. Then give yourself a break. Right? Recharge your mind and then go to the exam. Great. So let's begin. The first passage for today. Scientists recently discovered that emperor penguins, one of Antarctica's most celebrated species, and we all know that, employ a particularly unusual technique for surviving the daily chill, the winter, right? As detailed in an article published today in the journal Biology Letters, the birds, what they do is they minimize their heat loss by keeping the outer surface of their plumage below the temperature of the surrounding air. Now, what this does, see, at the same time, the penguins' thick plumage, जो उसका बाहर का जो plumage होता है, जो काफी thick होता है, it insulates their body and keeps them toasty. So warm रखने के लिए ना. Researchers ने analyze किया that the thermographic images taken over roughly a month during June 2008. During that period, the average air temperature was this much degrees Fahrenheit. And at the same time, the majority of the plumage covering the penguins' bodies was even colder. The surface of their warmest body part. Can you understand? Can you gauge the intensity of the chill? Their feet was on average this much, but the plumage on their heads, chests, and the backs were this much. Minus. See? Respectively. Overall, जो यानी कि warmest part होना चाहिए, वहां पे ये हाल है. Nearly the entire outer surface of the penguins' bodies was below freezing at all times, except for their eyes and beaks. Beaks क्या होती है? चोंच. So the scientists also used a computer simulation to determine how much heat was lost or gained from each part of the body, और discover ये किया गया that by keeping their outer surface below the air temperature, birds might paradoxically be able to draw very silent amounts of heat from the air around them. So बहुत कम. The key to their trick is the difference between two different types of heat transfer, radiation and convection. So what is convection? Convection वो process होता है जैसे heat transfer होता है, और plumage तो we know outer part, वो जो उनके feathers इकट्ठे करके उनको बोल देते हैं plumage. चलिए, the penguins do lose internal body heat to the surrounding air through thermal radiation. Just हमारी जैसे bodies, right, do on a cold day. Because उनकी bodies, but not surface plumage, are warmer. उनकी bodies are warmer than the surrounding air. Heat gradually radiate होता है excuse me, outward over time, moving from a warmer material to a colder one. To maintain the temperature of the body while losing heat, penguins, like all warm-blooded animals, क्या करते हैं? They rely on the metabolism of food. The penguins, though, have an additional strategy. क्या है वो? Since their outer plumage is even colder than the air, जो stimulation showed है that they might gain back a little of this heat through thermal convection, the transfer of the heat via the movement of a fluid, जो कि इस केस में air है. So जैसे cold Antarctic air उनके अराउंड सर्कल होता है ना, उनकी बॉडी के अराउंड, slightly warmer air comes into contact with the plumage और डोनेट कर देता है minute amounts of heat back to the penguins. Then
cycles away at a slightly colder temperature. तो इससे काफी उनको रिलीफ मिलता है. Most of this heat, researchers कहते हैं, probably does not make it all the way through the plumage and back to the penguins' bodies, but it could make a slight difference. फर्क तो थोड़ा बहुत पड़ ही जाता है. At the very least, सबसे कम, the method by which a penguin's plumage wicks heat from the bitterly cold air that surrounds it helps to, इससे क्या होता है, it cancels out some of the heat that is radiating from its interior, जाने से रोक देते हैं. And given the empress's unusually demanding breeding cycle, every bit of warmth counts. तो क्योंकि सर्दी बहुत होती है, तो ऐसी सर्दी में तो जो भी थोड़ी सी हीट है वो भी काउंट करती है. Since they trek as far as 75 miles to the coast to breed, and male penguins don't eat anything during the incubation period. Incubation जब period होता है तो ये उनका incubation period होता है. तो इसमें क्या करते हैं, वो कैलोरीज कंजर्व कर लेते हैं. सो जब कंजर्व करते हैं तो हीट कम छोड़ते हैं, तो उसी से वो सर्वाइवल बेटर हो जाता है. इन द लास्ट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ 3, स्लाइटली वार्मर एयर and at a slightly colder temperature refer to and respectively the cold Antarctic air. वापस चलते हैं जी. चलिए पैराग्राफ 1, 2 and 3. ठीक है, इसकी वो बात कर रहे हैं. ठीक है, चलिए. The cold Antarctic air which becomes warmer because of the heat radiated out from their bodies? Not at all. The cold Antarctic air whose temperature is higher, right, than that of a plumage, correct? And the fall in temperature of the Antarctic air after it has transmitted some heat to the plumage, that is correct. यही तो stated है, directly given है, so no need to think twice about this option. Which of the following best explains the purpose of the word paradoxically? यार paradox क्या होता है? Self contradictory सा जो हो, जिसमें दो different ideas हों. So keeping their body colder helps penguins keep their plumage warmer. इसमें तो कोई paradox है नहीं. Heat loss through radiation happens despite the heat gain through convection. इसमें भी paradox नहीं है. Keeping a part of their body colder helps penguins keep their bodies warmer. ये paradox क्यों है? Keeping a part of their body colder. Same body का एक part cold रखने से, plumage को cold रखने से, शुरू में देखा था ना, plumage का temperature कम रहता है. प्लमेज को कोल्ड रखने से अंदर हीट रहती है. सो जो जहां से सर्वाइवल है वो तो हीटेड है, राइट? ये है वो पैराडॉक्स, राइट? सो इट वाज क्लियरली मेंशन दैट इंक्यूबेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस they have to conserve energy. All right, all of the following if true would negate the findings of the study. So this will weaken the argument. The penguins' plumage were made of a material that did not allow any heat. How does this negate the argument? It doesn't. The temperature of the plumage on the penguins' heads, chest and backs were found to be this. Not at all. The average temperature of the feet of penguins in June 2000, this was found to be this. Oh my God. This weakens the argument, because according to our argument, plumage remains colder and it gives heat inside. So this weakens it if plumage is warmer. Okay, let's continue. Next paragraph, next passage rather. Sound the alarm, the kingdom of letters has admitted Trojan horses. James Frey, J.T. Leroy, Misha De Fonseca, Margaret B. Jones, Herman Rosenwald, and now Matt McCarthy, portions of whose baseball memoir the New York Times reports are incorrect, embellished or impossible. पहले कुछ नाम है, फिर कुछ रिपोर्ट की बात हुई है कि कोई रिपोर्ट ऐसी पब्लिश हुई है. वॉचमैन ने क्या किया है? जो वॉचमैन थे, they have let down their guards, यानी केयरलेस हो गए हैं. I write, hold your horses in the rush to diagnose these fake memoirs. memoir क्या होते हैं? memoir होता है एक autobiographical account. So वो autobiographical account ऐसा होता है कि एक लाइफ के एक पार्ट को मैं छपवा दूं, वो मेमोयर बन जाएगा. So as symptoms of diseased culture, we have failed to consider an equally plausible alternative, यानी possible alternative. What if the exposure of fake memoirists, यानी देखिए
ये पैराग्राफ में एक क्वेश्चन है अबाउट मेमोइर्स जो छपते हैं. नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखें या मैं लिखूं या कोई और लिखे, सो इज देयर अ गारंटी कि वो सच ही होते हैं? पहले कुछ नाम लिखे गए हैं, राइट, जिन्होंने अपने मेमोइर्स लिखे थे, राइट. सो लिखा गया है कि इनकरेक्ट हैं, एम्बेलिश्ड हैं, इम्पॉसिबल हैं. Isn't it true कि जब मैं ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा, so my mind will reject, it will select, right? It will ignore, it will manipulate, it will add information from itself, it will invent information, right? So even autobiographies do have an element of fiction, right? So वो कह रहे हैं कि what if the exposure of fake memoirists is not due to an increased frequency of lying, but rather to our increased ability to root out liars and hold them accountable for their verisimilitudes. Verisimilitude means the appearance of being being true, but not actually being so. So, शायद the outings of these hoaxes, hoax करना मतलब किसी को fool करना, mark not a blurring of the line between fact and fiction, but a further demarcation, और भी ज़्यादा demarcation. Indeed, it may be helpful to remember that the novel was born from exactly such confusion. So novel उसी confusion से निकला है. वो confusion सच और झूठ के बीच का जो text है, उसको उसी से novel का जन्म हुआ है. One of the standards by which the earliest novels were judged was their ability to convince readers that their narratives were in fact real. एक qualities शुरू के novels में ये जिस quality माना जाता था, जो quality होना जरूरी था, वो था कि कोई नॉवल कितना लोगों को बाइंड करके रख सकता था और कितना वो ऐसा लगता था कि वो सच है. ऑथर्स कुछ ट्रिक्स ऐसी अप्लाई करते थे जिससे कि इल्यूजन बन जाता था. रॉबिन्सन क्रूसो वाज रिटन बाय हिमसेल्फ. अपना खुद ही लिख दिया था रॉबिन्सन क्रूसो, अकॉर्डिंग टू द टाइटल पेज व्हिच ओमिटेड डैनियल डेफोज नेम. सैमुअल रिचर्डसन्स नॉवल पैमेला एक और एग्जांपल है. It is an attempt to instruct in good conduct through entertainment, right? Entertainment. It was written as a series of letters. ऐसे जैसे कि कोई letters की series हो, penned by the heroine, जो heroine ने लिखे थे letters. In his preface to the novel, which excluded his name altogether, जिसमें उनका नाम था ही नहीं, रिचर्डसन ने क्या include किया था? कुछ असली के letters from friends whom he had shown the manuscript, जिनको उन्होंने manuscript दिखाया था, उन्होंने कुछ letters लिखे थे. But he changed their salutation from dear author to dear editor. देखिए, and even writing under the guise of editor, खुद एक editor की तरह लिखा. Praised Pamela's letters. Editor और author में क्या फर्क होता है? Author ने book खुद लिखी होती है, एडिटर ने किसी और ने लिखी होती है, एडिटर ने उसको एडिट किया होता है, प्लस माइनस रिमूव कुछ करना है और कुछ ऐड करना है वो. सो हाउएवर दिस वाज अ लाई बट नॉट अ होक्स. ये झूठ तो था लेकिन बेवकूफ नहीं बनाया, किसी को फूल करने के लिए थोड़ा किया वो. इट वाज नॉट अ होक्स. रिचर्डसन वांटेड हिज नॉवेल्स टू बी रेड विद हिस्टोरिकल फेथ. वो चाहते थे कि एक हिस्टोरिकल फेथ की तरह के साथ वो पढ़े जाएं उनके नॉवेल्स, सिंस they contained, according to him, the truth of the possible, the truth of human nature. वो चाहते थे कि सच्चाई की तरह ही पढ़े जाएं क्योंकि उनमें एक element of truth था उनके हिसाब से. Richardson's authorship was revealed. Authorship reveal हो गई थी shortly after the publication of Pamela, but rather than serving time on Oprah's couch, he was hailed as an innovator of the novelistic form. तो एक नई novelistic form ही बन गई थी वो, जिसके इन्वेंटर उनको माना गया था. Quite interesting. Whereas novels were unashamedly fake memoirs. Fake memoirs ही होते हैं. Novels में भी तो authors अक्सर अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट ऐड कर देते हैं. Fake memoirs at their conception, recent hoaxes suggest that the line between the genres once drawn cannot easily be erased. So एक बार आप डिटर्मिन कर दो ये जॉनर्स बन गए तो फिर वो लाइन जल्दी से मिटती नहीं है, वो कन्वेंशन बन जाता है. दिस इज नो स्मॉल पार्ट ड्यू टू द इंटरनेट्स सर्विलेंस. एब्सोल्युटली. ऑल अलोंग हिस्टोरियंस हैड रेड क्वेश्चंस अबाउट मिशा डे फोंसेका हु क्लेम्ड टू हैव सर्वाइव्ड, जिन्होंने ये क्लेम किया था कि उन्होंने सर्वाइव किया था द हॉलोकॉस्ट. ओ माय गॉड.
by living with a pack of wolves. Wolves के पैक के साथ उन्होंने सर्वाइव किया था. But the engine of her downfall was her former publisher, Jane Daniels' blog. अब James phrase sine qua non of the fudget memoir A Million Little Pieces, ये नाम है जी, was debunked, criticized by the website The Smoking Gun, which posted his actual arrest records and compared them to phrase embellished retellings. So कई बार ऑथर अपने बारे में ना बड़ा अच्छा एम्बेलिश करके सजा के लिख देते हैं कि मैं तो वुल्व्स के साथ जिया, मैं शेरों के साथ सर्वाइव कर गया. कौन आ रहा है चेक करने? मेमोयर को क्रिटिसाइज करना कम होता है, मेमोयर को हम एक्सेप्ट ज्यादा कर लेते हैं क्योंकि ऑथर रियलिटी की तरह बता रहे हैं, एंड वी ट्रीट इट एज रियलिटी. If anything, you could argue that the fact checkers are doing too good a job. वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. There seems to be some risk that in attempting to hold memoirs to journalistic standards of actuality, watchdogs क्या करते हैं? They miss the forest of the trees. Fixation on minor details in books whose general pictures are correct. So while presenting बस वो ये हो जाता है कि minor details ignore हो जाती हैं. And it is not easy, किसी ऑटोबायोग्राफी की genuinity rather उसको टेस्ट करना. It's really difficult task. The New York Times includes in its dossier against Matt McCarthy disputations, मतलब जो dispute है उसमें, by teammates who McCarthy alleges threatened children and made fun of Hispanics, as though their denials of having said such self-incriminating things were more trustworthy than McCarthy's accusations. So McCarthy ने तो accuse किया उन जो बैचमेट्स थे, जो टीममेट्स थे rather, right? लेकिन उनसे ज्यादा उनका जो जो incriminating था, having said, denials of having said such things were more trustworthy, वो ज्यादा trustworthy लगे, right? So उनसे ज्यादा वजन या फैक्ट उनकी बातों में नजर आ रहा होगा. When Joe Canseco published his baseball memoirs, Juiced and Vindicated, reviewers caviled over minor details. Reviewers ने बहुत minor details को पढ़ा and unsubstantiated claims, including that he had used steroids. तो author को expose इन्होंने भी कर दिया. Recent events have proven the gist of Canseco's memoirs largely correct. ज्यादातर correct निकले हैं. At least gist तो correct निकली है. Indeed, it seems unlikely that, say, every claim in Casanova's The Story of My Life would hold up to such scrutiny. And yet, if we knew this were the case, would we excise it from the canon? Writers' enormous talents and sometimes render moot questions of their works as factuality are fraudsters, meanwhile attempted to compensate for their meager talents by actually inhabiting their bloated fictions. कई बार ऐसा होता है कि ऑथर्स ना बड़ा ब्लोटेड सजा के कुछ लिख देते हैं, बट देन रिव्यूअर्स जो हैं वो बहुत उनको मेहनत करनी पड़ती है. राइटर का जो इनॉर्मस टैलेंट्स होता है ना, कई बार इट कैन रेंडर मूड क्वेश्चंस ऑफ देयर वर्क्स. कई बार वो जो टैलेंट होता है वो हम पर भारी पड़ जाता है, हम उसकी बात को सच मान लेते हैं. ऑफ देयर वर्क्स फैक्चुअलिटी आर फ्रॉडस्टर्स, मीनवाइल अटेम्प्टेड टू कॉम्पनसेट फॉर देयर मीगर टैलेंट्स by actually inhabiting their bloated fictions. और कई बार ऐसा भी होता है कि टैलेंट बहुत ज्यादा ना हो, ऑथर्स जो है वो कंटेंट ऐसा डाल देते हैं कि हमें राइटिंग में एस्थेटिक्स नहीं नजर आता, हमारा फोकस वो कंटेंट पे रहता है. They suffer not an excess of imagination which can illuminate even the most mundane experiences. कई बार होता है experiences बेकार होते हैं लेकिन ऐसे लिख दिए जाते हैं कि बहुत जबरदस्त नजर आते हैं, but a retreat from it. And yet simply because they lost their handles on the truth does not mean that the culture also has absolutely correct. Maybe symptom of our age is not the fake memoirists themselves. Symptom ये नहीं है, but the catching of fake memoirists. और वो difficult भी. In which case, sound the church bells, the traitors are rooted, the watchman won. So जो watchman है वो जीत गए. Which of the following is a suitable title for the passage? How to write a memoir? Not at all. No techniques have been discussed. The age of literary fraud? No. It will be too sweeping a statement to be made. Who is afraid of fake memoirists? बिल्कुल. Why afraid? क्योंकि
वो ये है कि कौन डरता है इनसे, हम तो निकाल देंगे इनका सच। लिखा है ना एंड तक कि हम वो ये जो रिव्यूअर्स होते हैं सच निकाल देते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर अनलाइकली टू आर्ग्यू विद, रादर अग्री विद, किसके साथ अग्री कम करने के चांसेस हैं। There isn't more literary fraud in our age, more fraud is coming to light due to the internet surveillance. ये तो mentioned है इंटरनेट का surveillance, तो शायद इससे एग्री कर जाए वो। The line so there this is not the answer. The line dividing novels and fake memoirs was never clear. लिखा है ना यॉनर की लाइन डिवाइड हो जाती है तो मुश्किल, illusion वर्ड यूज किया था, तो इससे भी एग्री कर सकते हैं। As long as the main or essential part of a memoir is correct, it does not matter. लिखा है, mentioned है, इससे भी एग्री करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि पेड फूड मिस हो जाते हैं, बट दैट्स ओके, जस्ट सही होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट्स नाउ अ वाइड स्प्रेड डिजीज्ड कल्चर ऑफ लिटरेरी फ्रॉड, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इन एन एज ऑफ इंटरनेट ये तो एक्सपोज हो ही जाएगा। विद रिगार्ड टू द नॉवेल पैमेला, द ऑथर स्टेट्स दैट रिचर्डसन्स आर्टिफिस वाज अ लाई बट नॉट अ होक्स, झूठ था लेकिन बेवकूफ नहीं बनाया किसी को। व्हाट डज ही मीन? इट वाज एन अनइंटेंशनल डिसेप्शन। नो, अनइंटेंशनल तो नहीं था। That contained the truth of human nature, था तो intentional. It was just a ploy to capture the imagination of the readers with the truth of the possible. Absolutely, ये correct answer है। The word verisimilitude in the passage is the farthest, सबसे दूर, in meaning is absurdity. Yes, absurdity ही आंसर होना चाहिए। Plausibility तो possibility हो गया, authenticity genuineness हो गया, credibleness हो गया, किस पर कितना विश्वास उस पर किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट वन, कंकशंस आर ब्रेन इंजरीज। कंकशंस ब्रेन इंजरीज होती है, बिल्कुल सही बात, जब चक्कर आने लगते हैं चोट लगने से। दैट अकर व्हेन अ पर्सन रिसीव्स अ ब्लो टू द हेड, फेस और नेक। ऑल्दो मोस्ट पीपल हु सफर अ कंकशन एक्सपीरियंस इनिशियल बाउट्स ऑफ डिजीनेस, डिजीनेस भी होता है, चक्कर आते हैं, नोजिया, वॉमिट करने को मन करता है, ड्राउजीनेस, नींद आती है। दीज सिम्टम्स अक्सर डिसअपेयर हो जाते हैं आफ्टर अ फ्यू डेज। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं? आर लेस अंडरस्टूड एंड मोर सीवियर। रिसेंट स्टडीज ने सजेस्ट किया है दैट पीपल हु सफर मल्टीपल कंकशंस आर एट सिग्निफिकेंट रिस्क, ज्यादा रिस्क रहता है उनको। ट्रॉमेटिक एंसेफेलोपैथी, difficult name to pronounce. Encephalopathy, a degenerative brain disorder होता है, medical term है, that causes a variety of dangerous mental and emotional problems to arise weeks, months or even years after the initial injury. Very dangerous. ये जो psychological problems हैं, this can include depression, anxiety, memory loss, inability to concentrate and aggression. In extreme cases, कई बार extreme cases में जो लोग इनसे सफर करते हैं, they have even committed suicide, या कई लोगों को मार चुके हैं। So the majority of people who develop these issues are athletes who participate in high impact sports. Very sad. Although new sport regulations and improvements in helmet technology, तुम खेलते वक्त लगती होगी ना, so new sport जो helmet technology है, it can help protect players, हाँ, और नए players को भी, right? Sports media and fans all bear some of the responsibility for reducing the incident of devastating injuries. अब improvements in diagnostic technology जो हैं, they have provided काफी evidence to link severe and often fatal, मारने जैसा, psychological disorders to the head injuries, right, that players receive while on the field. The recent autopsies performed on the brains of football players who have committed suicide have shown advanced cases of CTE, जो disease की first paragraph में बात की गई है, in every single victim. In response to the growing understanding of this danger, National Football League ने revise किया है उसके safety regulations को. Players who have suffered a head injury on the field must undergo, उनका होना ही चाहिए, concussion sideline assessment, series of mental and physical fitness tests before being allowed back in the game. जैसे खेलते वक्त एक बार लग गई तो पहले टेस्ट होगा, उसके बाद वो दोबारा गेम में आएंगे। In an effort to diminish the amount of head and neck injuries on the field, और फुटबॉल में होना बहुत पॉसिबल है, हॉकी में भी, इवन रेसलिंग में, और भी कई स्पोर्ट्स हैं ऐसे। So began enforcing stricter penalty calls for helmet to helmet contact, leading with the head and hitting a defenseless player. So दोनों को हेलमेट लगा होना चाहिए, ये भी एक चीज है। Furthermore, as of 2010,
अगर एक प्लेयर का हेलमेट इज एक्सीडेंटली wrenched फ्रॉम हिज हेड, निकल जाता है ड्यूरिंग प्ले, द बॉल इज इमीडिएटली विस्ल्ड डेड, इमीडिएटली गेम को रोक दिया जाएगा. It is hoped that these new regulations coupled with advances in helmet design will reduce the number of concussions. उम्मीद यही है कि concussions का नंबर कम होगा and thus curb further cases. Efforts by the NFL and other professional sports leagues are certainly laudable. तारीफ की जानी चाहिए. We should commend every attempt to protect the mental and physical health of players. However, ये जो नए regulations हैं at the professional level cannot protect amateur players, especially young people. सबके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है ना. अब जो सीख रहा है, जिसके पास वो किट ही नहीं है, जो एक गांव का बच्चा खेल रहा है, तो वो तो वैसे ही खेलेगा. Fatal cases of CTE have been reported in victims as young as 21, which is very sad. Proper tackling form using the arms and shoulders to aim for a player's midsection. फुटबॉल में होता है ना, टैकल जैसे करते हैं, should be taught. तो proper tackling टेक्निक्स भी बताई नहीं जाती हैं at an early age. Youth, high school and college leagues should also adopt safety rules, जो बहुत मुश्किल है, more stringent than those of the NFL rather. इनको ज्यादा जरूरत है सख्त regulations की. Furthermore, young athletes should be educated about the serious dangers of head injuries at an early age. This can be very dangerous. शायद the most important factor in reducing the number of traumatic brain injuries, however, lies not with the players or the coaches or the administrators, but with the media and fans. तो हमारी शायद सबसे ज्यादा responsibility है. कैसे? Sports media producers have become accustomed to showcasing the most aggressive tackles. Absolutely. Sports media के जो producers हैं ना, वो सबसे aggressive tackles को highlight करते हैं जानबूझ के, क्योंकि उनको मालूम है कि वो बिकेगा ज्यादा. And most intense plays. NFL broadcasts often replay especially violent collisions. वो violent collisions बार-बार दिखाते हैं. While the commentators marvel at the players' physical prowess. और commentators बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कितनी physical strength है. Some sports highlight television programs even feature weekly countdowns of the hardest hits. कई बार वीकली काउंटडाउन भी शो किया जाता है टीवी पे कि ये नंबर 5 और तेज जो कंकशन या हार्ड हिट था वो नंबर 4 और 3, लाइक दैट. माय गॉड, व्हेन द मीडिया एक्सॉल्ट्स, जब हाईलाइट करता है मीडिया इन चीजों को, सच डेंजरस बिहेवियर को, प्रोफेशनल्स आर रिवॉर्डेड फॉर इंजरिंग ईच अदर ऑन द फील्ड एंड एमेचर्स बिकम मोर लाइकली टू ट्राई टू इमिटेट. तब एमेचर्स को और मन करता है कि उनकी तरह इमिटेट करो और दूसरों को हार्ड हिट करो. पॉपुलर हो जाते हैं ना उससे. Announcers, commentators, television producers and sports writers should engage in a collective effort to cease glorifying brutal plays. हमें ये brutal plays को glorify नहीं कर रहा है. हम सबको मिलके, commentators, sports media, you, me, we all. In turn, fans should stop expecting their favorite players to put their lives on the line. Absolutely. हम लोग बहुत तारीफ करते हैं ना, अगर कोई प्लेयर ऑलमोस्ट मर रहा है फिर भी खेल रहा है, हम उसकी तारीफ करते हैं. हमें नहीं करना चाहिए, हमें वो एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए. For the purpose of entertainment, players must not be encouraged to trade their careers. Trade थोड़ा ना करना उनके careers का. Their health, their happiness, वो बहुत important चीज है. They should not put their lives at stake. Based on the information in the passage, ये infer किया जा सकता है that all of the statements are true, except एक नहीं है. Tackling is not always dangerous. ये तो okay, it can be inferred except, ये तो किया जा सकता है. It is not always dangerous. However, players use improper tackling. ऊपर था ना कि tackling की टेक्निक्स बतानी चाहिए, उसे किया जा सकता है. आंसर इसलिए नहीं है. Scientists have established a definitive link between players who die untimely deaths and the onset of CT. ये भी है, given है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ. NFL officials have done little to address. They have not done little. They have done a lot. ये है आंसर. It cannot be inferred. उन्होंने काफी कुछ किया है. According to the passage, which of the following factors contributes to the incidence of CTE in amateur players? Inconsistent application of safety regulations for all levels. ये तो ठीक है. Application नहीं है ना all levels. Youth पे कहाँ है? School level पर कहाँ है? Lack of education about the dangers of head injuries. ये भी है, सही है. Amateur players desire to emulate professional. वो desire नहीं है,
वो हम क्रिएट करते हैं उनके लिए, खुद से थोड़ा सोच के आते हैं कि मैं फुटबॉल इसलिए खेलना चाहता हूं ताकि मैं दूसरों के सर फोड़ूं. As used in paragraph 3, which is the best synonym for laudable. Laudable means praiseworthy. Laudable means जो praise करे किसी की. The author's tone in the final paragraph can be best described as remorseful. पछतावा है किसी चीज का? नहीं. Hopeless? बिल्कुल नहीं. Perplexed? confused है? नहीं. Insistent? insist कर रहे हैं कि better measures use किए जाएं और ज्यादा awareness हो इस चीज की और हम इसको glorify ना करें. As used in the final paragraph, which is the best antonym for exalt. Exalt करना मतलब ऊपर ले जाना, तो नीचे लेके आना. mitigate, correct answer. venerate तो पूजा करना होता है, mollify करना होता है शांत करा देना. So ये भी correct answer नहीं है. Fine. All right. I hope you've been able to understand all the questions and answers. Very soon we shall meet you again. तब तक take care. Bye bye.